Good morning, students. This is Shivani Kumar here, your teacher of English, and I will give you some specific exercises to do or to understand the vast concept of to understand the concept of a vast grammar. Okay, so we have talked about the chapters which was given in your book, but now in this video I will give you some other exercises which are also very important for you guys to understand. Okay, this is for this is also from your grammar section, but this is for your general knowledge also. ये आपको पता भी होना चाहिए, ग्रामर में पढ़ा भी जाता है. Okay, so this is for the basic knowledge and this is also related to your grammar videos. Okay, so in this video I will give you homes of animals. This is the topic of our new exercise or topic. Okay, so homes of animals. होम मीन्स घर, एनिमल मीन्स जानवर, मतलब जानवरों का घर. ओके, तो व्हाट वी कॉल आवर हाउस. हम अपने घर को कभी कभी नाम देते हैं. कुछ लोग घर बनाते उसको घर बोलते हैं, बट कुछ लोग अपने घर को भी नाम देते हैं, लाइक शांति सदन. मतलब लाइक दिस वे दे ऑलवेज गिव स्पेशल पेज नेम टू देयर हाउस ऑल्सो. तो हम अपने घर को नाम देते हैं, अपने घर को घर बोलते हैं. तो ठीक उसी तरह जानवर के घर को क्या बोला जाता है. जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, नेस्ट में. ओके, तो उसके घर को क्या बोलते हैं, नेस्ट, घोंसला. इंसानों के घर को घर बोलते हैं, हाउस, होम. ओके, जिसमें वो रहते हैं उसे मकान बोलते हैं. तो हम अपने घर को मकान बोलते हैं, उनके घर को घोंसला बोलते हैं. तो जस्ट लाइक दिस वी हैव टू नो अबाउट द होम नेम्स ऑफ अदर एनिमल्स. नेम ऑफ द homes of other animals. Okay, so I will give you some total 8 here. Here we have the first one. Okay, I will start like this. Homes of animals. Homes of animals. Our first animal is cow. Second, lion. Third, dog. Horse. Hen. Cat. Okay. Look, cow, lion, dog, horse, hen, goat. Here we have total 8 animals name. Now I will write the name of their homes. Cow, गाय. गाय जहाँ रहती है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गौशाला. तो what we call them, call that in English. गौशाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शेड. ओके, इन हिंदी गौशाला, in English shed, 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 cow, cow lives in shed, shed, shed. Now we have lion. Lion is a king of jungle, and I think you guys already know about this. Lion is a king of jungle, and what kind of house he lives. ये कौन से घर में किस टाइप के घर में रहता है. तो lion lives in den. लायन कहाँ रहता है, डेन में. लायन रहता है गुफा में. गुफा को इंग्लिश में केव कहते हैं, पर जहाँ लायन रहते हैं उसे हम डेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डेन, DEN. ओके, LIN लायन, DEN डेन. लायन लिव्स इन डेन. डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. एंड कुत्ते कहाँ रहते हैं, कुत्तों का एक छोटा सा घर होता है जो लकड़ी टाइप का. आपने कभी बहुत सारे कार्टून्स में देखा हो. जनरली इंडिया में तो वैसे कम दिखने को मिलते हैं घर में डॉगीज के लिए स्पेशल हाउस, बट आपने सिंचान में देखा होगा. उसका जो एक प्यारा सा डॉगी था वो एक अपने घर में ही एनी टाइम रहता था. तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इन इंग्लिश केनल. व्हाट वी कॉल्ड केनल. ओके, तो अगर आप लोगों ने केनल को नहीं देखा है, सिंचान देखो. सिंचान में आपको दिख जाएगा बहुत आराम से कि केनल कैसा होता है. वो ही इंसान के घर की तरह रहता है, बस उसे लकड़ी से बना दिया जाता है एक डॉगी के साइज का, ताकि कोई भी डॉगी उसमें आराम से रह सके. ओके, सो तो डॉग लिव्स इन kennel, DOG, dog, and dog lives in kennel. Now we have horse. What we have, horse. Horse means घोड़ा. तो where is horse live? Horse कहाँ रहता है? Horse lives in stable.
जिसे हम हिंदी में अस्तबल कहते हैं। ओके, अस्तबल कन्वर्ट्स इनटू इंग्लिश स्टेबल, STABLE, स्टेबल। ओके, STABLE स्टेबल, और इंग्लिश में इसे हम हिंदी में अस्तबल बोलते हैं। हेन, नाउ वी हैव हेन। तो हेन कहाँ रहता है? कूप में, बाड़े में। आपने देखा होगा जहाँ मुर्गियाँ बहुत सारी रहती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? बाड़ा। हेन कहाँ रहती है? बाड़े में। ओके, नाउ वी हैव गोट, GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी। तो वेयर गोट लिव्स? गोट लिव्स इन बार्न। ओके, बार्न। हिंदी में तो जहाँ पे रहती हैं बकरियाँ एक साथ उसे भी बारह ही आई थिंक बोलते हैं। आई जस्ट डोंट नो दैट मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द कूप एंड द बार्न। ओके, कूप हम जहाँ मुझे पता है हिंदी में जहाँ मीन्स भी बारह ही हो गया यहाँ पे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ऑफ कूप, बट बार्न का तो बारह ही है, आई एम श्योर। नाउ वी हैव कैट। तो कैट लिव्स इन हाउस। बिल्ली तो हमारे साथ ही रहती है मोस्टली, तो बिल्ली जहाँ रहती है उसको हम हाउस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस होम्स ऑफ animals. Okay, so what you guys have to do, you guys have to write down this homes of animals in your notebook, because this is very important exercise and it will definitely come into your UT for term 1. Okay, that's why I'm saying this is very important. You have to do this in your book. Now I will give you sound of animals. Okay, हम बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं टॉक। उसे इंग्लिश में क्या करते हैं? टॉक, स्पीक लाइक दिस। हम इंसान बोलते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो लाइक दैट जानवर के पास अपनी ओन लैंग्वेज है। अब उनके लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। हमने होम्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जान लिया, जानवर के घरों को क्या बोलते हैं, कौन सा जानवर किस घर में रहता है। अब हम जानेंगे कौन सा जानवर कौन सी भाषा बोलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Look, now I will give you sound of animals, and after that I will give you babies of animals. In this video I will complete the whole animal kingdom, okay, according to your standard. Now I will start the sound of animals. Sound of animals. Okay, so let's start with our first animal. Sound means आवाज and animal, तो जानवरों की आवाज उसे हम क्या बोलते हैं हम उसके बारे में जानेंगे in English. Now dog, the first animal is dog, number 1, and in the 2 we have cat, then we have dog, in the 4 we have donkey, in the 5 we have crow, now we have a snake, then we have, after snake we have lion, cow, horse and hen. Lion, cow, horse, hen. So this is all we have in this sound of animals. So let's talk about the sound of dog. Okay, every animal has their own sound. सारे जानवरों के पास अपनी own sound है, अपनी आवाज़ है. But what we call them? Okay, what is the name of dog's sound? उसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? तो what is the name of dog sounds? Bark. What is the name of dog sounds? Bark. Okay, कुत्ता है जो भौंकता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्क, BARK, बार्क. बार्क मीन्स भौंकना, बार्क मीन्स भौंकना. तो डॉग ऑलवेज बार्क्स, कुत्ता हमेशा भौंकता है. ओके, नाउ वी हैव कैट.
So what is